Trading losses for companies. Please note one thing that this topic is similar like individual trading loss, but it's bit easier. In individual trading loss, we have a lots and lots of things. The first one was basis period was applicable when we calculate loss for individual. But for the companies, there is no basis period at all. Companies don't have tax here. They are taxable as per their TTP and TTP based on their accounting year, accounting period, and 19% is fixed. So there is no basis period for companies. Individuals, we have ongoing, we have opening year, we have last year. So that's why in individual trading losses, it took a lot of time to complete the topic. And I already forward you the videos as well, and we had the classes. So individual trading loss is quite tricky because of the involvement of basis period. Because of the involvement of basis period. But for the companies, trading loss is bit easier because there is no basis period rules. There are no basis period rules for the company. So first of all, how the loss will arise. So you have a small question, car loss. Can you read this one, please? Carlos Limited had the following results for its year ended 31st August 2020. Capital allowance for the year amount to £21,000. Should we So calculate the tax adjusted trading loss for the year ended 31st August 2020? okay. So net profit is 13,000. For the companies, it's known as profit before tax. Depreciation allowed or not allowed? Depreciation is not allowed expense. So what we are going to do? We are going to add it back, right? Yes. So it's coming how much? 18,000. And any other thing? There's capital allowance. How much capital allowance? 21,000. 21,000. So the answer is coming in minus. It's called It's a loss. trading loss. This is the way the trading loss will arise for the company, similar like the individual. And now if you see the B part, the difference is they are saying that assume that they don't have 13,000 profit, they incurred a loss of 10,000 at the beginning. Yani the loss incurred by the company, there is no profit, assume it has a loss of 10,000, what will going to happen? So see, we have depreciation which is not allowed, going to add it back. So the answer will come in negative. Answer will come minus 5,000, and capital allowance is 21, means my loss is going to increase. Capital allowance can create a loss, and capital allowance is the only thing which can increase the loss and which can create the loss. It's creating loss in A part and it's increasing the loss in B part. Same thing, the similar type of question we already did when we were doing the individual. So the arising of loss for both cases, for individual and companies, are the same. Any problem? No problem. Note it down, please. Once done, let me know. The if the loss arises for the company, if the loss arises for the company, the first way to claim it is carry forward. The first way or first method to claim the loss relief for the companies is also similar like individual, that you are allowed to carry forward your loss. You have a question called Popeye Limited. Limited is reflecting that this is a company's question, not an individual question.
Please read the question. Copy Limited has a current year tax adjusted trading loss of £35,000 for the year ended 31st October 2020. Company's projected tax adjusted trading profits are as follows. Year ended 31st October 2021, 14,000. Year ended 31st October 2022, 6,500. Year ended 31st October 2023, 15,600. Copy Limited also has property income of £5,000 each year. Calculate Copy's Limited taxable total profit for 4 years ended 31st October 2023. Assuming the loss for the year ended 31st October 2020 is carried forward and claim is made to re- relive as much as a loss as possible in each of the future periods. Okay. So what they are saying? They are saying that bhai, we have a Popeye Limited. This is a company, and the company incurred a loss. Now, first of all, must remember that for the company's case, there is no basis period. There is no basis period, so it will be bit easier. Now, first thing must remember, this is the company, so there is no basis period at all. So year end will be our final one, 2001, 2002, oh sorry, 2021, 2022, 2023, and the loss arises in which year? 2020, right? Yes. Now, first of all, the carry forward loss relief. This relief can be carried forward in future. Just I am trying to remind you the individual case. In the individual, it can be adjusted from trading income. Remember, not from total income. This was the case in the individual. That in individual, when we carry forward the loss, it was only carry forward from trading income. But now we are not doing, or we are not dealing with individuals. We are dealing with companies. So for the companies, it's bit different. The difference is it will be adjusted from total income, not from trading income. This is the thing, students can miss it and they lose the easy marks. Thing is same, working will be same, that loss will be carried forward to the next year, to the next year, next. But if it is applies in individual, it will be carried forward from trading income only. But if it is applicable in the companies, it will be applies from total income only. Got my point? Loss will be denoted as zero, so I wrote it zero as a loss. Then incomes are there. Here you go. If it is individual, I will carry it forward from here, trading income. But it's not a case of individual, it's Popeye Limited. Means I will add if we have other incomes. Like you can see, property income each year 5,000. So I'm gonna add it in all the years. And I have, this is TTP formats, no? So if I have all the incomes, it will be total profit. For in companies, it's not total income, it will be total profit. 5,000, 19,000, 11,500, and 20,600. From the total, I will adjust loss relief, and this is known as carry forward. Carry forward from the previous year means brought forward to the next year. Loss arises here, no? This year is, this is the year of loss. So the next year is this one. How much is your loss? 35,000. You remember the loss memorandum? 35 was the loss. I am going to use in
31st October 2021. How much I can use? 19. 19,000. How much left over? 16,000. So the next year 11,000 will also be surrendered, means gone. How much left over for the next one? 4,500. Very good. 2,000, 4,000, 4,500. and to be carry forward to 2023 is 0. So here this one, and after the loss adjustment we will have the TTP. TTP 0, 0 and 16,100. So the carry forward relief for the company is done. What is the difference between the carry forward loss relief in individual and company is mentioned. For individual, it applies only from trading income, and for the companies, it's applicable from total profits, which is adding up all the incomes. Any question in the carry forward loss relief is done, completed. After doing this carry forward relief, we have the second relief available for companies is the current year loss relief. Current year loss relief means you can claim the loss from the current year. Any current year means in the year of loss. For the shortcut, please remember this, that companies' losses can only be adjusted from total profits. Either it's a carry forward loss relief, it's current year loss relief, it will be terminal loss relief, whatsoever. If the companies is there, loss incurred by a corporation, simple, the relief will be applied from total profit, which is before, which is you can say before TTP. Simple. Now the current year loss relief will work that for the whole year of loss, and we will apply it. You have a question called SAG Limited at your screen. I need you to read it, please. Sage Limited had the following results for the year ended 21st March 2020. Tax adjusted trading loss 40,000, property income 10,000, charitable gain 50,000, qualifying charitable donations 10,000. Show how the trading loss could be relieved with a current year claim. Okay, requirement A only. Requirement A only we are going to discuss first. So the requirement A is show how the trading loss can be claimed within a current year claim situation. This is only 1 year data, right? So 30 year ended 31st March 21. We have trading profit 0 because loss we are not writing. Loss we are writing in loss memorandum. Loss arises in 31st March 21, which is 40,000. Correct? Now I will add all the incomes because I need total income or total profits. Chargeable gain is 50,000, and I do have QCD. What I have? QCD. The total will be 60,000. This is known as total profit. Now, less current year claim, yani current year loss relief. Am I right? How much is your loss? How much is your loss? Trading losses 40,000. So is it possible to apply it in this one? From the 60,000 you can adjust it? Yes, we can. And then we will have QCD in this question. This is companies, no? So after QCD we will have TTP. This is the answer. Simplest. Yani we can claim corporation tax loss relief
from the current year of loss. From the current year of loss. This is allowed. This is allowed. This is the part A. What is the part B? Can you read the part B? Show how your answer to A would be different if the tax adjusted trading loss was 60,000 pounds. Okay. This is A part, no? Done. B part is saying that assume that you have a trading loss of how much? 60,000. 60,000. So my income is 60. So how much I can adjust? 60. 0. What will happen to QCD? QCD is the reducer of TTP, right? QCD is the reducer of TTP, and because of the donations, my taxable total profit reduced means ultimately my tax is going to save. Because of donations, my tax is saved. Donations, why we are giving donations? On the perspective of tax, to save the tax. But here you pay 10,000 QCD, but because of the loss relief, do you have any income left? No, we don't have any income left. So the purpose, as per the tax rules, the purpose of donation is to reduce your incomes. Reduce the incomes means reduce the tax. But here, because you apply for the current year loss relief, your total profit was 60, and because of the loss of 60 it became 0, means no faida, no benefit you got of doing donations, of doing QCD, means the benefit of QCD is vested. Got my point? Got it. That's called current year loss relief. Note it down and let me. The third option available for companies to claim the losses is known as carried back relief. As we saw till now, the topic is very easy. If you are hands-on with the individual trading loss, this one is very, very easy. But now the tricky part is coming up. This tricky part is known as carried back relief. Carried back relief means company can carry back its loss for the previous 12 months. Carried back means how many months you can carry it back? 12 months. How many months? 12 months. 12 months. How to do this one? Now we are going to learn. There is a question called marjoram. You can see the question, please. Please read out the question. Marjoram Limited has the following results. Year ended 31st March 2019, 2020, and 2020. Calculate the taxable total profits for all periods affected, assuming that loss relief is taken as soon as possible. Okay. Now, the simple thing is we will apply this relief as well for the companies. It's current and carried back. For the companies, we already make a rule of thumb that every relief will apply from total profit. So same thing will apply here. You have a loss in 2021. The easiest part of company is there is no basis period at all. And these all are year ended 31st March. I have trading profits. I am writing it 11,000, 9,000, and loss is we are going to put the loss in the memorandum section, right? Loss arises 2021. How much is the loss? It's 45,000. Now, other incomes, just add it. Interest income is this one. Chargeable gain, because company losses can only be adjusted from total. QCD, no. QCD will be the last one. Before, after the loss adjustment, QCD will comes, right? So we have
total profits. Now loss relief. We are learning current year and carried back. Current year means year of loss. Which is the year of loss? Which is the year of loss? 2021. How much you can adjust here? 4,500. How much loss left over? 40,500. The maximum carried back, how many months you can go back? The maximum carried back in normal situation is 12 months. How many months? 12 months. How much I can adjust? 9,500. I cannot adjust anything from more than 12 months. I can come till here only because the limit is 12 months max. Carried back limit is maximum 12 months. Then I have the answer. And then QCD is given 250, this one, and TTP will comes 11250, and here no faida, no benefit of doing the donation as per the tax. So west, and I am writing here used in 2020 9,500. The leftover loss is 31,000. What I will do with this 31? I can go more back? No. This will be to be carried forward to 2022. I can carry it forward. Yani same thing like individuals. Apply current year loss relief, current year, then go 12 months back, and whatever left over, just carry it forward. But the difference between carry forward relief in individual and companies is, in individual, carry forward relief apply from trading income only, but in the companies the carry forward relief also applies from total profit. And that's it for current and carried back loss relief. Any questions, please? You can ask or note it down. Now we have more practice question for the same topic. You can read the requirement is written as earliest as possible. Relief as soon as possible. In individual, we discussed this hint as well. As soon as possible. If examiner wrote down this thing, this means apply the loss relief in this order. Current year, carried back. How many months carried back? 12 months, and then carry forward. We knows this from the individual topic that if examiner says as soon as possible, it means current year carried back and whatever left over will be carried forward. Now this is the question. I need you to just go through with the question numbers so it's easy for you. Okay. Now, which is the year of loss? Loss arises in which year? 31st December 2020. How much is the loss? 100,000. Okay. So we have loss available. So I am writing loss arises in 9 months ended 31st 12 2020, and the loss is 100,000. Okay, big amount. This is the year of law period of loss, and the remaining just I am putting the data as we used to do. Trading profit, tax adjusted trading profit. Now this is not an individual, so I will just add quickly all the other incomes. 3,000, 10,000, 5,000, 0, 10,000, 40,000, 10,000, and 0. Any doubts? QCD will be the last one. This total 50. Here also 50, then 20, and then 43, I guess. This is my total profit. Loss relief. Now carefully, please.
current year, and carried back how many months? 12 months. This is the period of loss. Current year, how much you can adjust? How much you 12 can adjust? months. Only for 12 months. Sorry, Only for 12 months. 50,000. Yeah, 50,000. Current year adjustment is 50,000. So the loss left over is 50,000. How many months you are allowed to go back? 12 months. Now, very carefully, I will ask you, what is this? This is what? Is what written? Highlighted in yellow is Year end. year end. Year And you are end. allowed, year end means how many months? 12 months. And you are allowed how many months? 12 months. So I will go this one in this manner, and I will adjust 20,000 here, used in year end 31st March 2020, and the 30,000 to be carried forward. Correct or no? Correct. Now 40, one second. And the carry forward, this is not an individual. This is what? This is companies. And companies carry forward relief will apply from trading income or from total income. Total income. Sorry, For companies, it's total income. total income. So I make it here. Am I right or wrong? Yeah. So used in 31st 12 21, 30,000 means available loss is 0. So 43 here, 0 0 20,000, and I have QCD 1,000. Okay, fine. Here West, this one also vested, and this one 1,000, and I am going to get TTPs 42,000, 0 0 and 19,000. Any confusion? Current year carried back, carry forward. When we carried it back, see, I am not focusing this that this is the period of 9 months. What I should do? No, Khalli Walli, this is not the case. What you need to see, you are going back. You are going back. Just look. The previous period is year end. Yes, it is year end. Khalas, finish. Just apply the relief and the leftover carry forward. Any questions? Any confusion? Please ask. Otherwise, note it down. We have discussed PLC. There is a small difference between star PLC and the last question which we did mid. A small difference. Very carefully. I just calculated the total profit which was just copying paste from the question. They wrote it as early as possible means current year loss relief will be current, then carried back. How many months carried back? 12 months, and whatever will be left, it will be carry forward. This is the year of loss. No future information is available. So we will only show the carry forward amount in the memorandum. We will not show it in adjustment. Now, current year, how much you will adjust? The loss is 50,000. In the current year, yani year of loss, how much you can adjust? Your voice is not coming up. 6,000 is used. 6,000, correct. So I left with 44,000. Okay. Oh, sorry. 6,000 current. 6,000 0. Now I will go back very carefully. This is how many months? I 12 am months. going back. I am allowed how many months? I am allowed 12 months. If I coming back, this is how many months only? Only 5 months. Sorry?
It's only 5 months. So out of 12, I came only 5 months back. How many months left? 7 months. This 20. So this 7 months, I will come here or no? Allowed or no? Yes, it's allowed. So how I will come? This 7 I calculated. See this amount of 27,500. This is for the 7 months or this is for the year end? Year end. So how much amount for 7 months if I use the maths? 1604. So how much I can adjust from here? 16042. Sorry. Let me make the memorandum. So you can see in the mint, the last question and in the star, there's a difference. The previous, we have to look. If it is less than 12, we have to complete the 12 months. And if it is 12 months, we are allowed only 12 months come going back. So that's the case, and that is the trading losses for companies. Only one thing left, which is terminal loss of company. And this is a very small topic. So inshallah in the next class we will start with that one and we will continue with till the group reliefs and the losses and corporation tax will be completed inshallah. We will try to do it by tomorrow. Okay. Any questions in this one? I'm just completing it. No questions. Okay, just tell me the figures, the final figures. 11458. This will be my TTPY because there is no QCD available in this question. And that's it for the trading losses for companies. Only one small topic, which is terminal losses left. And then we will move forward with the group relief or group losses. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faizan Farooq and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss terminal loss for companies. अब देखें हमने इंडिविजुअल के ट्रेडिंग लॉसेस को डिस्कस किया था तो वहां पे जो टर्मिनल लॉस है उसकी कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट था टर्मिनल लॉस की कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट था और टर्मिनल लॉस इंडिविजुअल का कैलकुलेट करने में एक ट्रिक्स थी जिससे हमें वो थोड़ा मुश्किल लगता था बट फॉर द कंपनीज टर्मिनल लॉस बहुत ही आसान होता है टर्मिनल लॉस फॉर द कंपनी सिंपल है लास्ट 12 मंथ्स का लॉस यानी बिजनेस जब बंद होता है बिजनेस क्लोज होता है तो बिजनेस के लास्ट ईयर का लॉस इज टर्मिनल लॉस यानी वो फॉर्मेट जो इंडिविजुअल में सीखा था उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है कंपनी का टर्मिनल लॉस लास्ट 12 मंथ्स का लॉस होता है और इसका क्लेम कैसे होगा तो जिस तरह इंडिविजुअल का क्लेम होता था सेम उसी तरह से कि पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि टोटल प्रॉफिट यानी जो टीटीपी की वर्किंग में टोटल प्रॉफिट आता है वहां से एडजस्ट होगा और आप इसको कैरीड बैक करेंगे इंडिविजुअल में भी कैरीड बैक होता था कितने इयर्स 3 इयर्स 3 इयर्स का मतलब कितने मंथ्स होता है 36 मंथ्स कौन सी बेसिस लीफो बेसिस मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर आप इसको करेंगे कैरीड बैक ठीक है तो ये है कंपनी से केस में टर्मिनल लॉस अब हम एक क्वेश्चन करेंगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कि भाई टर्मिनल लॉस को कैसे देखते हैं क्वेश्चन का नाम है ब्राउन क्वेश्चन का नाम है ब्राउन लिमिटेड लिमिटेड है मतलब कंपनी का क्वेश्चन है आप देखें ब्राउन लिमिटेड हैज बीन इन ट्रेड फॉर मेनी इयर्स और एनुअल ईयर एंड करती है और इसके बाद जो है कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि उनका एडजस्टेड प्रॉफिट बैंक इंटरेस्ट चार्जेबल गेन क्यूसीडी और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि
कंपनी ने टैक्स वजह से ट्रेडिंग लॉस किया है 525,000 का इस साल। और अब पता कैसे चले कि भाई कंपनी बंद हुई है? तो ये लिखा हुआ है कि भाई कंपनी सीज ट्रेडिंग। तो जो लास्ट ईयर का लॉस, ये ईयर एंड है, लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर का जो लॉस है, प्रॉफिट जीरो है लेकिन यहाँ लिखता है कि 525 का लॉस हुआ है। तो जो लास्ट ईयर का लॉस होता है, इट्स कॉल्ड टर्मिनल लॉस, इट्स कॉल्ड टर्मिनल लॉस। और टर्मिनल लॉस कंपनी के केस में गिवन होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, डायरेक्ट शेड्यूल बनेगा। इंडिविजुअल के केस में टर्मिनल लॉस निकालने के मार्क्स अलग थे और उसकी वर्किंग अलग थी, लेकिन कंपनीज आसान है, कंपनी इजी है, पीस ऑफ केक है टर्मिनल लॉस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। शेड्यूल के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं ये हमें आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअल में और कंपनीज में शेड्यूल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 17, कॉलम्स बन रहे हैं 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, फिर 9 months ended 31 December 19, and then year ended which is the last year of trade, यानी ये वो साल है जब बिजनेस क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है टर्मिनल लॉस। इंडिविजुअल में टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना होता है, कंपनी में टर्मिनल लॉस लास्ट 12 मंथ्स का लॉस होता है और गिवन होता है, ये आ गया टर्मिनल लॉस। टर्मिनल लॉस की एडजस्टमेंट कैसे होगी? सबसे पहले करंट ईयर से और फिर देन 3 years यानी 36 months कैरीड बैक। ठीक है, और लॉस मेमोरेंडम आपको पता है कैसे बनाते हैं, देखिएगा। लॉस अराइजेस year ended 31st 12 2020, which is 525,000. This is the amount of loss, and this is the last year of trade, means is terminal loss। और टर्मिनल लॉस एडजस्ट कहाँ से होता है? टोटल से होता है, टोटल प्रॉफिट से होता है। और कंपनी में कोई सा भी रिलीफ हो वो टोटल से ही होता है। तो आइए पहले हम टोटल प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख लेंगे, बैंक इंटरेस्ट गिवन है, फिर चार्जेबल गेन भी गिवन है तो लिख लेते हैं 450,000, 9,000 और 7,500। इसे मैं डेटा पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, तब तक आप स्टे ट्यून रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर भी कीजिए जब तक हमने डेटा कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट। हमारे पास क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। टोटल लिखते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे। 466,500, देन 90,000 आई गेस, 246,000, 46,500 एंड 1,500। अब लॉस रिलीफ, और ये कौन सा रिलीफ है? टर्मिनल लॉस का रिलीफ है। टर्मिनल लॉस कितना पीछे जाएगा? पहले तो करंट मंथ से होगा ना, करंट मंथ से कितना एडजस्ट हो गया? 1,500, यानी यूज्ड इन 31 दिसंबर 2020, 1500, 1,500 यहाँ एडजस्ट हो गया। कितना रह गया? 523,500। अब पीछे जाना है 36 मंथ्स। ये कितने मंथ्स हैं? 9। चलो 9 मंथ्स एंडेड पे हम आए और यूज किया 31/12/19। ये हो गए भाई, कितनी अमाउंट है? 46,500 की। तो चलो ठीक है, 46,500 हम यहाँ से चले हैं, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ 9 मंथ्स थे, आना कितना है? 36 मंथ्स। 9 मंथ्स हो गए, फिर पीछे गए तो यहाँ लिखा हुआ है ईयर एंड। ईयर एंड मतलब 12 मंथ्स। चलो भाई 12 मंथ्स पीछे आ जाओ, 31/3/19, 246,000। अभी भी लॉस अच्छा खासा बाकी है, तो वी कैन मूव फर्दर बैक। 9 मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए, यहाँ आए 12 मंथ्स और हो गए। चलो भाई ईयर एंड 31/3/18 कितना है अमाउंट?
90,000। अभी भी लॉस बचा है, अभी भी लॉस बाकी है। आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं कि लॉस अभी भी बाकी है। अब हमें 3 इयर्स पीछे आना है, 36 मंथ्स पीछे आना है। और आप ट्रेडिंग लॉस के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में ये चीज देख चुके हैं कि पीछे आते हुए काउंट करना होता है। तो भाई 36 मंथ्स बैक आना था, ये 9 मंथ्स हो गए, ये 12 हो गए, ये 12 हो गए। यानी 36 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12, स्टिल वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी मंथ्स? स्टिल वी आर लेफ्ट विद 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बाकी हैं भाई। ये कहाँ से लेंगे? ये यहां से लेने पड़ेंगे। 3 मंथ्स कहाँ से लेने पड़ेंगे? यहां से। और ये 3 मंथ्स कैसे होंगे? ये आपको पहले भी सिखाया, दोबारा बताएंगे। इसकी वर्किंग होगी, कैसे वर्किंग होगी जरा गौर से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। इसको हम अलग कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको नजर आए और समझ भी आए कि देखिए ईयर एंडेड 31/3/17। यहां से हम कितना लेंगे भाई? इधर जो अमाउंट है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 466,500। लेकिन ये ईयर की है, ईयर एंड है, 12 मंथ्स की है। और हमें कितना अलाउ है आप देखें, ऊपर अभी रफली वर्किंग की है कि 36 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12, वी नीड हाउ मेनी मोर मंथ्स? वी नीड 3 more months। तो कितना लॉस आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 466,500 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई बाय 3। द आंसर विल बी 116,625। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बैलेंस ऑफ लॉस, जिसको हम कहेंगे लॉस्ट। भाई अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? बिकॉज बिजनेस इज नो मोर। बिजनेस शट डाउन हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया भाई, बिजनेस बंद हो गया। लास्ट ईयर का लॉस करंट ईयर और 12 मंथ्स बैक एडजस्ट हो सकता है, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि आपका बिजनेस सीज हो चुका है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से क्यूसीडी लेस होगी और हमारे पास टीटीपी आ जाएगी, जिसपे हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं। जब आपकी इनकम जीरो हो गई है तो आप क्यूसीडी करो या ना करो, कोई फायदा नहीं होगा, ये हम बता चुके हैं। तो क्यूसीडी इन्होंने की है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एवरी ईयर दे आर पेइंग 30,000 एज क्यूसीडी। तो फर्स्ट ईयर तो बेनिफिट मिलेगा, यानी आपके अमाउंट्स रिड्यूस हो जाएंगे और टीटीपी आएगा 319,875। लेकिन इसके बाद क्यूसीडी करने का सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन टैक्स के अंदर इसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। आपका टैक्स रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, आपने रिलीफ के लेके इनकम को खत्म कर दिया है। तो ये आप कह सकते हैं कि टर्मिनल लॉस फॉर कंपनीज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का ट्रेडिंग लॉस खत्म हो चुका है, लेकिन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाए या वो आपसे टैक्स सेविंग्स या टैक्स प्लानिंग में ट्रेडिंग लॉस दे दे तो इसको कैसे डील करना है। तो लूजर लिमिटेड इज अ कंपनीज नेम। अब ये देखिए, ये टर्मिनल लॉस का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल है। यानी वीडियो 1 और वीडियो 2, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमने कंपनीज के ट्रेडिंग लॉस का आपको भेजा है और हमारे चैनल पे भी है, उसको देखिएगा तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा और चीजें ज्यादा समझ आएंगी। देखें, लूजर लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी और 30 सितंबर ईयर एंड है और टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम और क्यूसीडी गिवन है। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से पढ़नी होती है। एडवाइस लूजर लिमिटेड के भाई किस तरह से अपने लॉस को एडजस्ट करेगी कंपनी और कितना टैक्स सेव होगा, दो चीजें। अब देखो भाई, ये लॉस कंपनी को यहाँ पे हो रहा है, इस ईयर एंड में हो रहा है, ये टर्मिनल लॉस तो है नहीं, ये है सीधा सीधा लॉस। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। पहला ऑप्शन क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। यानी कंपनी, हम लिखेंगे कि भाई द लॉस कैन बी फुली ऑफसेट इन द ईयर एंड। कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा? यानी हम कहेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉस। कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉस अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ बोलते थे। कि कंपनी क्या कर सकती है भाई? अपने लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करेगी। कंपनी क्या करेगी? अपने लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करेगी। और इससे होगा क्या?
भाई देखो लॉस है इतना, ये लॉस आगे जाएगा तो 180,000 एडजस्ट हो जाएगा, यानी इस अमाउंट से ये 200,000 आपका रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा मतलब टीटीपी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। टीटीपी रिड्यूस हो जाएगी तो 180,000 इंटू टीटीपी में अगर आए, अगर ये 200,000 होता तो 200,000 पे कितना टैक्स लगता, 19%। अब जो है वो 180,000 का रिलीफ आगे आ गया तो सिर्फ 20,000 पे 19% लगेगा, मीन्स टू से 200,000 जो है वो 180,000 की एडजस्टमेंट के बाद सिर्फ 20,000 रह जाएगा, तो टैक्स सिर्फ 20,000 पे देना पड़ेगा। 180,000 की अमाउंट पे 19% के हिसाब से आपका टैक्स सेव हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन था भाई, उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा ऑप्शन होता है भाई कंपनी के पास करंट ईयर। आप करंट ईयर क्लेम करो और फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये भी ऑप्शन होता है, करंट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड। अब देखो जरा ध्यान से, अब करंट ईयर लॉस आप एडजस्ट करेंगे। करंट ईयर से कैसे करेंगे, अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो करंट ईयर क्या है आपको पता है, कंपनीज का कोई सा भी एडजस्टमेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट से होता है। तो लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट जीरो, अदर इनकम्स यानी इंटरेस्ट इनकम गिवन है 5,000, टोटल हो गया, टोटल प्रॉफिट विल बी 5,000, लॉस रिलीफ विल बी 5,000 फ्रॉम हियर, और जो बच गया वो अगले साल, अगले साल मतलब ये 200,000, फिर ये 6,000 आया, 206,000 हो गया, और बाकी जो लॉस बच गया है विच इज 180 में 5,000 यहाँ एडजस्ट हो तो 175,000 यहाँ एडजस्ट हो गया। ओवरऑल, ओवरऑल आप देख लें क्या हुआ, 180,000 ही आपका यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 180,000 ही आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अब ओवर द 2 years टाइम मिल रहा है, ओवर द 2 years टाइम मिल रहा है। और क्यूसीडी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे तो चलो 2,000 की क्यूसीडी रहेगी, ये 31,000 है आई गेस, और ये और हमारे पास आ जाएगा टीटी 180,000, ये 5,000 और 175, 180,000 इंटू 19% के हिसाब से अगेन टैक्स सेविंग कितनी हुई, सेम हो गई। तो सर फर्क क्या है, बेटा फर्क मैं आपको बताऊंगा। फर्क देखिएगा, इस केस में आपकी क्यूसीडी क्या हो रही है, वेस्ट। अगर क्यूसीडी वेस्ट ना होती तो क्यूसीडी कैन ब्रिंग यू द बेनिफिट, ब्रिंग यू अ बेनिफिट, कितना बेनिफिट, 2,000 की अमाउंट आपने क्यूसीडी की है, मतलब 2,000 की अमाउंट पे हमारा टैक्स सेव हो जाता। अब ये बात जरा टेक्निकल है, इसको देखो दूसरे अंदाज से हम बताएंगे। देखो कैसे, इसको जरा गौर से देखना है, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको समझाने के लिए रफ वर्किंग कर रहा हूँ। ये यही ईयर है, ठीक है, 5,000 आंसर था। अज्यूम करो लॉस रिलीफ ना लेते तो यहाँ पे कितना आता, 5,000 आता। क्यूसीडी कितनी अप्लाई होती सर, 2,000 अप्लाई होती, यहाँ पे आंसर क्या आता, 3,000 का आ जाता। अगर लॉस रिलीफ ना लेते तो यहाँ 3,000 आता, और इस 3,000 पे आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉस रिलीफ यहाँ पे अब 3,000 नहीं आ रहा, आपका टैक्स बच रहा है, यानी 3,000 का 19% के हिसाब से 540 टैक्स सेविंग हो गया, यानी टोटल टैक्स सेविंग इन दिस केस इज 33,820। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगर सिर्फ ये दो ऑप्शन होते तो आप किसको सिलेक्ट करते हैं सर, ऑब्वियसली हम ज्यादा वाले को सिलेक्ट करते हैं। तो ज्यादा वाला जो आंसर है वो क्या है, वो आपके सामने है, ठीक है, 34,200। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और अपने पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है हमारे पास भाई कि करंट ईयर से एडजस्ट करो, देन कैरीड बैक करो 12 months, और इसके बाद अगर बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड, यानी एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल वाली ट्रिक अप्लाई करो। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले
5000 इसी तरह से 5000 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम 5000 को एडजस्ट कर देंगे ना। 5000 को एडजस्ट करेंगे तो वही हमारी कहानी जो क्यूसीडी की ऊपर हमने कही थी कि 3000 का जो अमाउंट है उस पे 19%, यानी जो ऊपर 540 हमने निकाला था सेम 540 यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ये 540 नहीं है, ये 570 है। इसको 570 कर लीजिए, कैलकुलेटर थोड़ा गलत हो गया था। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद 175,000 आपका लॉस है। ठीक है, अब ये लॉस क्या होगा, ये लॉस आपको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड। लेकिन एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल है कि इसमें पहले करंट ईयर, फिर कैरिड बैक। कैरिड बैक का केस क्या होगा, देखो हमारा लॉस यहाँ है, ये लॉस का साल है। पीछे जाएंगे, 200,000 की इनकम और 7,000 का इंटरेस्ट, 207,000 अवेलेबल है। तो 207,000 में से अब देखो कितना एडजस्ट हो सकता है भाई। यहाँ पे हमारा जितना एडजस्ट हुआ 5,000 एडजस्ट हो गया पहले साल में, 175,000 बचा विच विल बी एडजस्टेड इन द प्रीवियस ईयर। क्या आंसर आएगा, 33,250। टोटल इज 33,820 सेम। यानी इस केस में भी देखो 5,000 यहाँ पे 175 कैसे आया था भाई, 5,000 पहले साल एडजस्ट, जिस साल लॉस हुआ था उस साल करंट ईयर में यहाँ पे ये 5,000 एडजस्ट हो गया था, कितना बचा था 175। 175 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था। सेम चीज यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे करंट ईयर के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैरिड बैक हुआ। क्या हुआ, कैरिड बैक हुआ। अब देखो तीनों ऑप्शन है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर दो, करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड कर दो, और एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल करंट, कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड कर दो। तीनों के आंसर है। हाईएस्ट आंसर, हाईएस्ट फायदा कहाँ पे है, ऑप्शन ए में 34,500। तो लिखेंगे कंक्लूजन, ऑप्शन ए will therefore save the most tax which is 34,200। और ये हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का लॉसेस का चैप्टर या टॉपिक खत्म हो जाता है। कि बुक का चैप्टर 16 है, और ये हमारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, या CRQ2 जो है उसके अंदर भी ये छोटा सा पार्ट बन के आ सकता है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है।